Hello students, welcome to all. I'm Khan Mushin Azhar, USP teacher, going to teach you the secretarial practice with the new pattern. What we have learned in the previous topic, which we have learned meaning of working capital, how the working capital can be used in the business, difference between working capital and the fixed capital. What is the today's topic? Today's topic which we are going to discuss, it is also relate from the first lesson, but heading and the topics is different. We have discussed about the capital requirement in the first lesson. Then we go with the type of the fixed capital. What is fixed capital in the business? Factor affecting of the fixed capital. Now today's topic is factor affecting of working capital. So what do you mean by the factor? Factor means a fact or situation for something which affect the situation in the business. Anything can be happen in your business, like demand can affect, sales can affect, nature of business can affect, size of the business can affect, luxurious item can affect. So any fact or situation which can be decide your working capital. Now go to the slide. Before starting the working capital factor, we must be understand first of all about the operating cycle of the business. As we know that fixed capital can be invested once, twice or thrice into the business, but as a working capital it's a type of the capital where you have to run your business continuously. You can see the picture. First of all, your production start with the raw material, then it converted into the work in the process, then you make your final goods. After making the final goods, finished goods, you have to be sell it out with the collection with the credit payment. After selling the product, again your production converted into the cash, and cash again converted into the raw material. So this is a process, each and everything is connected to each other. So working capital requirement is necessary into the business. We will learn one by one. Now there is another slide. It's not a factor of the working capital. I'm just giving you the reminder so you people can understand what is exactly working capital. What are the sources of the working capital? Public deposits, bank credit, trade credit, advance from customer, income from sale, self financing, issue of shares, issue of debenture, cash credit, discounting of bill, packing credit, commercial paper, and etc. That means working capital is the need of the short term financing in the business. तो sources आपको मालूम होने चाहिए, how you can collect your working capital from the different sources. Now the main topic is factor affecting working capital requirement. First of all, we will understand the meaning, then we will go one by one factor. There is no precise standard to measure working capital adequacy. That means you cannot calculate the exact requirement of the working capital. Management has to determine the size of the working capital in the light of certain aspect of business firm and economic requirement within which the firms operate. तो स्टैंडर्ड आपको कुछ नहीं है कि मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो एज अ मैनेजमेंट यू हैव टू डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल विद द सर्टेन एक्सपेक्ट. इस सोच के साथ कि आपको बिजनेस और आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सर्वाइव करना है इनटू द बिजनेस विद इन द बिजनेस. तो फैक्टर इफेक्टिंग हम लोग पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर, headings are same like the fixed capital factor, but the paragraph, inside the paragraph there is a different meaning for the working capital. So what is your first factor? First factor is nature of the business.
What do you mean by the nature? We already discussed in the previous video. Nature of the business means what types of work is to be done in the business, which decide the need of the capital. Now we will read the paragraph first. Firms engage in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of the liability. The firms, the owner, those who are engaged with the manufacturing essential product, so what they need less working capital. Reason is that why? Because of they have a constant and sufficient cash inflow to pay the liability amount. Likewise, public utility concern have to maintain small working capital because of the continuous flow of the cash from their customer. So मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनीज है, उनको क्या होता है, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है. रीज़न इज दैट दे हैव अ फिक्स्ड एंड दे हैव अ कांस्टेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. सेम एज इट इज पब्लिक यूटिलिटीज में आपको क्या होता है, यू गेट दी continuous cash flow from your customer, so you don't need to maintain more working capital requirement into the business. On the contrary, on the opposite side, if the business is dealing in the luxurious product, if you are making as a owner, as a business, if you are making the luxurious product, it's require huge amount of the working capital, as sales of the luxurious items are not frequent. So sales of the luxury item are not frequent, so you will not get the cash instantly, immediately. So you need to maintain your working capital requirement. Trading, merchandising firms which are concerned with the distribution of the goods have to carry big inventories of the goods to meet customer demand and have to extend their credit facilities to attract the customer. Hence, they need the large amount of the working capital. Being a trading company, being a merchandising firm, what you need to do, you have to invest so much amount in your distribution of the goods. You have to maintain your inventories to meet the customer demands. Customer की डिमांड कभी भी आ सकती है. You have a heavy demands, so maintaining your distribution of the goods, maintaining your inventory of the goods, you need more working capital as compared to the another one. Next topic is size of the business. Size of the business means scale or volume of operation turn out by a single firm. जो भी आप produce करते हो, जो भी बनाते हो, that is called as the volume of the operation. Size of the business. The size of the business also affect the requirement of the working capital. A firm which large scales operation will require more working capital, and the firm with the less scale operation require the less working capital. It's obvious, if you produce more you require more capital, if you produce less you require the less capital. Now go to the next factor. Next factor is volume of the sale. What do you mean by the volume? Volume is the number of the unit that are sold in a given time period. आप जो भी कुछ बनाते हो वो एक वॉल्यूम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर होता है. So this is your third factor of the working capital. This is the most important factor affecting size of the working capital. The volume of the sale and the size of the working capital are directly related with each other. That means there is no opposite interaction between the sales and the working capital. Direct relation है आपका. If volume of the sales increase, अगर आप ज़्यादा produce कर रहे हो, that means you require more working capital. If you are producing less, if your volume of the sales is less, then you need the less capital. यहाँ लिखा है, देखिए, रीड द पैराग्राफ. इफ वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इंक्रीज, अगर आपका सेल्स बढ़ता है, देन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. अगर आपका वॉल्यूम कम रहता है, डिक्रीज होता है, देन यू नीड द लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. तो वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इज ऑल्सो इफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल.
What do you mean by the production cycle? The period during which the objects of labor. आपका प्रोडक्शन साइकिल के लिए क्या क्या ज़रूरत है? You need the labor, you need raw material प्रोडक्शन बनाने के लिए है. Production cycle, the process of converting raw material into the finished goods is called production cycle. आपका जो raw material है, when you converted your raw material into the finished good, it is called the production cycle. If the period of the production cycle is longer, then you require the more working capital. If manufacturing cycle is short, then you require the less working capital. तो ज़्यादा प्रोडक्शन में आप टाइम लगाएंगे तो दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन योर वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस पर्पज, फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, फॉर द प्रोसेस पर्पज. बट if your manufacturing cycle is short, then you require the less working capital. Now the next one, बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल क्या होता है? व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज. जब आप देखते हो बिजनेस, आपकी इकोनॉमी बहुत फास्ट जा रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आपको सेल्स क्या होती है? इंक्रीज होती है. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक. अगर आपकी इकोनॉमी फास्ट जा रही है, यू आर इंक्रीजिंग योर सेल, दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट विल बी ऑल्सो इंक्रीज. दिस रिक्वायर द एडिशनल वर्किंग कैपिटल. आपको मोर प्रोडक्शन देना है, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, देन यू रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल. ड्यूरिंग रिसेशंस, रिसेशन मतलब जब आपका प्रोडक्शन कम होता है, जब आपकी इकोनॉमी डाउन होती है रिसेशन टाइमिंग में, सेल्स विल डिक्लाइन एंड हैंस द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल विल बी ऑल्सो डिक्लाइन. ओवर इन ऑल देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी जब आपका प्रोडक्शन कम होता है. तो बिजनेस साइकिल ऑल्सो इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट वन, यू कैन सी द बिजनेस साइकिल. जैसे आपका पीक टाइमिंग. पीक टाइमिंग जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है. एक्सपेंशन जब आपका बिजनेस बढ़ता है. कॉन्ट्रैक्शन जब आपका बिजनेस थोड़ा कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है. देन ट्रफ. ट्रफ का मतलब होता है जब आपका जो बिजनेस है एक लाइन में लॉन्गर पीरियड की तरफ जाने लगता है. तो देयर इज अ बिजनेस साइकिल. समटाइम्स योर बिजनेस कम टू द कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशन, समटाइम कम्स into the expansion situation, sometime the trough situation, sometime in the peak situation. So you have to maintain your capital requirement according to the time period of the economy. Sixth factor, terms of purchase and sales. How we do purchase and sale? Sometimes we do with the cash, sometimes we do with the credit. If the firm doesn't get credit facilities for purchases but adopt liberal credit policy for its sale, then it's require the more working capital. अगर आपकी फर्म को क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब जब आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, आपको लेट पेमेंट करनी होती है, बट योर वर्क विल कंटिन्यू. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कैश, यू कैन यूज योर क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर परचेजिंग समथिंग, बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स. आपकी लिबरल पॉलिसी जो है, लाइक आपको चैरिटेबल डिस्काउंट देना, इस तरीके से आप कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा? इट्स रिक्वायर दी मोर वर्किंग कैपिटल. On the other hand, if credit terms of purchase are favorable and terms of credit sales are less regular, then requirement of cash will be less. That means अगर आप कोई चीज़ परचेज कर सकते हो क्रेडिट पर, राइट, और आपकी जो सेल्स हो रही है वो लेस लिबरल है, तो आपको क्या है? कैश की रिक्वायरमेंट कम होती है. दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस. तो अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, देन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. इफ यू आर गेटिंग द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेजिंग द थिंग, देन यू रिक्वायर द लेस वर्किंग कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर, क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट मालूम है, उधार. कंट्रोल, उधार को कैसे कंट्रोल करें. तो दिस इज योर हेडिंग, वन ऑफ द फैक्टर फॉर द वर्किंग कैपिटल. Credit control is this system used by the business to make sure that credit is given only to the borrowers who are likely to be able to repay it. As a business person,
आपको ये श्योर करना है कि आप ऐसे ही कस्टमर को ऐसे ही कस्टमर को पैसा दें जो आपको रीपेमेंट कर सकें. दैट इज कॉल्ड दी क्रेडिट कंट्रोल. We will read the paragraph first, then try to understand the meaning. Credit control include the factors such as volume of credit sales, the terms of credit sales, and the collection policy. All the things are comes into the credit control. Policy is sound. अगर आपकी credit control policy ठीक है, it is possible for the company to improve cash flow. तो अगर आपकी पॉलिसी ठीक है, साउंड वे में है, देन देर इज अ होप दैट योर कैश फ्लो फॉर द वर्किंग कैपिटल विल इम्प्रूव. बट इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल मतलब जहाँ पे आप थोड़ी सी छूट दे देते हैं, इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फंड. अगर आपने क्रेडिट पे किसी को सामान दी है एंड यू आर बिहेविंग इन अ लिबरल वे, देन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर कलेक्शन ऑफ द फंड्स. इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ द बैड डेबिट. अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी देते टाइम पे लिबरल नेचर रखा है, देन इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम टू कलेक्टिंग द फंड एंड इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ द बैड डेबिट. बैड डेबिट मतलब जो आपको पेमेंट नहीं करते. Therefore, a firm require more working capital. इस कंडीशन में आपको क्या करना है, more working capital की रिक्वायरमेंट है. The firm making cash sales require less working capital. Over and all, if you are selling your product on the credit, then you require more working capital for the future purpose. But if you are selling the product and you are getting the cash sales, then you require the less working capital. Now the next factor, growth and expansion. Whenever you think that as an owner, as a business, you want to increase your business, you want to expand your business, then you need the working capital requirement. As the growth of the business, your working capital requirement will also increase. We will read the paragraph. The working capital requirement of the firm will increase with growth of the firm. A growing company needs fund continuously to support the large scale operation. जो कंपनी आपकी आगे जा रही है, बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो उसको क्या होगी, कंटिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होगी कैपिटल की. विच टाइप ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. तो बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन, योर वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑल्सो इफेक्टेड. नाइन्थ फैक्टर, मैनेजमेंट एबिलिटी. मैनेजमेंट के डिसीजन, मैनेजमेंट की पॉलिसीज. The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and the distribution of the goods. Production department, distribution department, if they both are connected to each other, if they both have a good communication, if the management is making the proper policy, then a firm stocking on a heavy inventories call for higher level for working capital. तो आपको क्या करना है, आपको जो अगर आप ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, हैवी इन्वेंट्रीज कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. देयर मस्ट बी अ मैनेजमेंट डिसीजन, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजन वेयर यू कैन डिसाइड योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. External factor, this one is the last factor given in your textbook. External factor means if financial institution, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पैसा देती हैं, एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड. As an institution and bank, if you are providing the funding to the business whenever they require, that time they need the less working capital. So over and all, you can say that working capital means a circulation capital which is used to run the business. So capital requirement included both the things, fixed capital requirement and working capital requirement. So today we have completed the topic, what, factor affecting of working capital. That means fact or situation which may be affect your working capital requirement. Summary of the video,
We have learned about the factor affecting of working capital. So remaining video from the lesson 1 we will continue to the next slide.